हेलो वेलकम 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 टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। कैसे हो मेरे चाहिए? तो आज आप देख रहे हैं बायोचा वर्ल्ड का एक वीडियो। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे को बेसिकली ऐसे रिएक्शन देने में मज़ा आता है, प्लस में हमें सीखने को भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, इसीलिए मैं इस टाइप के वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है। आज जो हम देख रहे हैं, सिमुलेटिंग अ फूड चेन इन एन एक्वेरियम फॉर 1 year। Most aquariums are about beauty and the peace they can add to a space. यप। But this one wasn't built to be peaceful. ओके। It was built अच्छा, सारा टेरिटोरियल एक्टिविटी हमें देखने को मिलेगा। एक्चुअली ये हॉबी स्टार्ट ही हुई है सुकून शांति देने के लिए। मेरे ज़िंदगी में उथल पुथल रहता है, तो मैं आके अपने टैंक को घूरता रहता हूँ ध्यान ध्यान से, ताकि ज़िंदगी की जो भंग हुई है शांति, वो हम वापस से एक्वायर कर पाए। to see what happens when territory, survival, and instinct are given space to collide. This tank wasn't designed to look natural. It was designed to act natural. Because this tank isn't about control. It's about observation. Setting the conditions, stepping back, and letting the system tell its own tale. This aquarium started lush, planted and packed with greenery from top to क्रेजी bottom. पीस ले ली भाई। Stems breaching the surface, roots tangled into the substrate. ओह विंडीटी, ये सारे लोटेक प्लांट्स हैं। Plants filled every corner. It was the kind of aquarium that was growing faster than I could keep up with. But every tank reaches a point where you stop maintaining it. ओह जावा फोन, हाँ ये एक्चुअली मैं भी बिलीव करता हूँ इस चीज़ में। एक टाइम आता है जब मैं टैंक को छोड़ देता हूँ, भाई करो अपना, तो वो थोड़ा सा जंगली सा हो जाता है। वो सेम अभी कंडीशन मेरे अभी फ़िलहाल एक टैंक का हो रखा है, दूसरा का बर्बादी चल रहा। And start questioning it. And quite frankly, I just Monstera, felt like it was time nice. for something new. And if I wanted to tell that story, everything had to come out. But रीस्टार्ट before करते I हैं। could even touch the aquarium, something else had to move. My massive bird of paradise plant had slowly taken over this corner of the room. But if I was going to rebuild this aquarium from the ground up, I needed space to work. So my prized plant moved out first. And once that space was clear, the real transformation could begin. इसमें कोई फिश नहीं I थी drained by the some way? water first, then removed the plants that were being held in place by the lid, scooped out slowly so I could finally see down into the tank. Now the hardscape. The driftwood was lifted out piece by piece. During the removal process, the water turned cloudy, वो तो packed नहीं with है। years of debris, mold, and broken down plant matter. This was the hidden side of a mature planted tank. Productive, but messy when disturbed. Grabbed one of those cool sand leveling tools that all the cool aquascapers use. But with wet, heavy sand, it didn't work nearly as good as my hand. Sometimes the simplest tools are still the best. ओके, इसमें सिर्फ सैंड था और उसमें वो सारे प्लांट्स ग्रो कर रहे थे। बढ़िया। आई मीन हाँ, मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह रहते हैं, अगर फिश के पूप से वो चलते रहता है, न्यूट्रिएंट्स का वो लेवल काफ़ी इनफ रहता है। मैं कोशिश करता हूँ कि जब मैं टैंक बनाऊँ तो एक इनफ अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट जिसमें न्यूट्रिएंट्स पैक हो, वो नीचे में देने की कोशिश करता हूँ। बट इट वाज ग्रोइंग रियली गुड। आई मीन रूट फीडर्स प्लांट्स मैंने देखे थे। Heavy stone. And when you're stacking serious weight inside an aquarium, I couldn't gamble breaking the glass. मैं दबाए रख देता Pieces हूँ of styrofoam ऐसे went ही। down first, soon to be hidden beneath the sand. It spreads pressure evenly and gives me peace of mind if gravity ever makes a sudden appearance. The first rock went in, but this wasn't the focal point. This was the foundation. The main rock would rely on this stone staying exactly where it was. Then came the showpiece. It was ridiculously heavy. ओके Lifting it over the front panel and easing it in. सेफ प्रोसेस ये करना ही पड़ेगा। एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा बड़ा बोल्डर है। मैंने यूज़ करा अपने टैंक में इतने बड़े बोल्डर पहले, बट सिंगल एक बोल्डर यूज़ करना सैंड के ऊपर में चल जाता है, बट
जितना अमाउंट ऑफ इसमें मेरे को लग रहा है पत्थर जाने वाले हैं, इट्स रियली बी ऑन द सेफर साइड की ऐसे फोम या फिर कुछ ऐसे कुशन वगैरह लगाना ज़रूरी है. Decorative, yes, but more so functional. Crevices, overhangs, dead ends, escape routes, all planned strictly for my stocking. This setup is inspired Hiding by Lake space. Tanganyika in Africa. It's one of the oldest Ah, and most complex freshwater systems on Earth, and home to fish known not for bright colors, but for personality. समझा These are समझा. fish that recognize neighbors, defend real territory, and make decisions that actually change the environment around them. I wanted to see what happens when it starts behaving like it. When the layout felt right, I began filling the tank. As the water rose, the sand erupted into swirling clouds. एक्चुअली पता है ये काफ़ी ज़्यादा नेचुरल और काफ़ी अट्रैक्टिव टू आइज इसलिए लग रहा है बिकॉज ये एक स्लोपिंग सा डिज़ाइन में इसको सारे पत्थरों को प्लेस किया गया. मतलब एक तो 3 रेशियो वाला चल रहा, मतलब 3 रेशियो वाला नहीं, एक्चुअली 3 पॉइंट रेशियो वाला चल रहा. पहले 1 2 3 3 डिफरेंट सेक्शन आपको दिख रहे होंगे. सबसे हायर ग्राउंड, फिर लोअर ग्राउंड, और उससे भी एक लोअर ग्राउंड. वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा तीनों एक साथ एक चीज़ों को. और बीच में वो एक ऐसे ट्रायंगल सा माउंटेन वाला फील दे रहा. प्लस में राइट साइड वाला पत्थर एक्सट्रीमली बिग है, तो वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उस तरफ. एक फ्लो भी बनाता है, एक सिमेट्री बहुत तगड़ा दिखता है एक्चुअली. और काफ़ी सारे हाइडिंग स्पेस है, तो जो फिशेस इसमें आने वाली हैं बहुत ही एंजॉय करने वाली है इस चीज़ को. We'll call this एक्चुअली ये वाला स्केप का स्टाइल मैंने इससे पहले किंग ऑफ डीआईवाई के वीडियो में देखा था, जिसमें उसने सेम काइंड ऑफ सिमिलर चीज़ें बनाई थी फॉर बंच ऑफ फिशेस. वो सिकलेट ही थी आई गेस, यही वाले सिकलेट थी, मेरे को अभी याद नहीं उतना. बट उसके पास भी ऐसे शेल्स वगैरह थे बिकॉज इसमें ये हाइड करना बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं. एंड उसमें शायद ब्रीडिंग वगैरह हुआ था नहीं हुआ था मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट yes, it's very similar. real estate because the first residents were shell dwellers. A group Oh, of four हाँ, Neolampologus shells. similis entered the tank together. Slightly larger than your standard Maltese, but with the same bold personality. One of them stood out immediately. A thick black band wrapped around his body like a belt. They didn't move in right away. By the next day, things had changed. A pair had claimed the rock. ओके, पेयरिंग स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे इस प्रोसेस के दौरान, और उन्होंने एक एरिया ढूंढ लिया है जहाँ पे वो लोग अपना चीज़ें करेंगे और सेटल डाउन हो रहा है काफ़ी बढ़िया से. Mr. Miyagi and his companion eventually made their way over, settling closer to the shell zone. Cichlids have a reputation for being more territorial and aggressive than your average community fish. यप, ये तो है. सिकलेट प्रजातियाँ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती हैं अपने टेरिटोरी को लेके. तो हाँ, वन ऑफ द फ्लावर हॉर्न्स की प्रजाति जो है, वन ऑफ द नहीं एक्चुअली सारे फ्लावर हॉर्न की प्रजाति, इट्स सिकलेट फैमिली के सबसे टेरिटोरियल और सबसे एग्रेसिव फिशेस को कंबाइन करके बनाया गया है. तो एग्रेशन तो खून में ही है इनके. And while this wasn't chaos, there was definitely tension. हाँ भाई, Posturing, shimmying displays, and the occasional aggressive sand blast. ये पक्का दोनों मेल Most of होंगे. it was communication, each trying to say they were the big dog. Still, a new environment usually resets the hierarchy, so I expected some friction. भाई साहब, खतरनाक Instead of मारपीट कर waiting रहे for थे it ये to लोग. escalate, I added movement as a distraction. A group of 4 Julidochromis transcriptus, or Julies for short, from a local breeder joined the tank next. The torpedo-shaped critters don't really Magnificent. swim like other fish. भाई कितने प्यारे लग रहे हैं भाई, क्या कलरेशन है भाई साहब, क्या पैटर्न्स है. वाओ. They glide, hugging rock faces, slipping into cracks that seem impossibly small, seemingly levitating. They scavenge the rocks for microfauna and algae. क्या मोमेंट है They भाई. remind me of little dolphins,
so graceful. आई मीन बहुत लोग ऐसा सोचते हैं ना कि ब्लैक रॉक्स है, ब्लैक बैकग्राउंड है, डार्कर एरियाज है, तो उसमें ब्लैक फिशेस अच्छी नहीं लगेंगी। लुक एट दिस, कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है एक्चुअली। देखो मतलब इसकी हल्का सा ब्लूइश टिंट इनके बॉडी पे जो है, फिर वाइट पे पैटर्न्स जो हैं ब्लैक पे आ रहे हैं। The Similis began digging constantly. Clouds of sand filled the tank as territories were एरियाज carved बना deeper रहे हैं। and deeper. हाँ, ये ऐसे वाले फिशेस के साथ आप रिस्क नहीं ले सकते हो आप। वो क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट, डिफरेंट काइंड ऑफ सबस्ट्रेट बनाने का कोई मतलब भी नहीं बनता, बिकॉज वो उखाड़ फेंकेंगे वैसे भी। सो प्लांटेड टैंक में ऐसे फिश को रखना कोई मतलब नहीं बनता। उनके नेचुरल हैबिटाट जहाँ पे वो लोग नेचुरली रहते हैं, वहाँ पे ऐसी कोई वेजिटेशन नहीं रहती है। ऐसा ही सैंड और रॉक्स और शेल्स ज़्यादा पाए ज़्यादा क्या मतलब मैक्सिमम ऐसे ही दिखते हैं, डिट्टो। सो अगर आप ऐसे फिशेस के लिए अगर बनाने का सोच रहे हो टैंक, मोस्टली सिकलेट का ऐसा रहता है ना कि उनको ऐसे ही इन्वायरमेंट ज़्यादा पसंद आता है, बिकॉज यू नो खानदानी है ये लोग। Completely reshaped their side of the tank with massive sand mounds and buried rocks. It was absolute architectural chaos, which I loved because I enjoy when fish actually show their natural behavior. However, आफ्टर ऑल इस टैंक को सेटअप इसीलिए किया गया था कि उसके नेचुरल बिहेवियर को देखा जाए तो इट्स गुड। एंड एक्चुअली मतलब मेरे को नहीं पसंद कि मेरे सैंड को कोई छेड़े। he told me he just grabbed a bunch of shells and wasn't sure that there were actually fish in them. I got the shells into the water and waited. And waited. And waited. Did I really get a bag full of empty shells? Then, a head popped out. And another. And soon, more started to slowly reveal their existence. Damn, look The at Julies approached those carefully, stripes. curious but cautious. The Maltese vanished instantly, retreating back into their shells. Eventually, they emerged, 5 in total. And it was immediately obvious who was in charge. One large male, unmistakable, क्या the stripe है foundation भाई। of the colony. Sand was being moved in abundance. Look at the size of these mounds. Okay. I thought it was just some excess sand flying around. क्या बात है भाई, क्या लग रहा है, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता ये कितना बढ़िया लग रहा है एक्चुअली। नेचुरली उन्होंने स्केप किया भाई इस चीज़ को। आई मीन प्रीवियस का देखोगे और अभी का देखोगे तो सैंड की जो ये माउंटेन्स बने हैं काफ़ी डायनामिकली कितने बढ़िया लग रहा है भाई। फिश ने स्केप किया है इस चीज़ को। But it looks like we finally had babies. Hey? At this point, they're so small, the camera can barely focus on them. There were about 10 or so. ये एक्सपेक्टेड नहीं But था। now the tank is in a different setting. If you follow the channel, you'll know I had to move last year, midway through this project. The first batch of fry is starting to get some size on them. The tank, meanwhile, entered an ugly phase. Glass algae, hair algae, cyano, and a strange reddish purple algae I'd never seen before. अच्छा लग रहा है, not gonna lie. My goal was to have some algae to replicate the natural Tanganyikan habitat, but this much just looked distasteful and unkept. So I got to work, first on the glass. Now that I can see into the tank, it was time to break out Old Reliable, a toothbrush. This annihilated any trace of the purplish algae. The cyano and long hair algae could इन सब का इस टैंक में आने का मेजर रीजन क्या हो सकता है? लेट मी थिंक। एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स, एक्सेसिव लाइट, यस। just be siphoned out with a hose, leaving just a bit to look the way I wanted. I thought flow might be the issue, so I adjusted the filter output to what I presumed to be a more favorable direction. For good measure, I plopped a little monstera plant in the top for nutrient export. ये अच्छा Balance, return. ये अच्छा है।
Feeding time brings everyone out and shows just how big the भाई छोटे colony छोटे has बच्चे gotten. कितने मस्त लग रहे हैं He creeps through the shadows, भाई then साहब emerges. A huge gold head compressiceps. मॉन्स्टर This was the fish that inspired this whole tank. What a cool looking fish. I mean, come on. Look at those teeth. They live in the rock crevices as ambush predators and wait for the perfect moment to strike their prey. Or until they find a honey hole of shells ripe with baby fish. ए बच्चे खाए जा रहे He हैं tested the system immediately. Diving into the shell bed, he tried to capture every fish he could from the shells with his elongated mouth. But the parents fight back. Hey, get out of here! They yell as they dart at the offender. Eventually, they chase him off. The homestead is safe. For now. But he soon tries a different approach. Scoping from above, he waits on just the right moment and strikes. Oh darn, just a leaf, he mutters to himself in disappointment. Now back to the stalk. He darts down again, but the adults fight back and chase him out one more time. This goes on every day, like plankton trying to steal the Krabby Patty secret formula from Mr. Krabs. ओ भाई ये मेरे को देखना पसंद नहीं है एक्चुअली मतलब पर्सनली बट नेचर में ऐसा ही होता है भाई The Maltese still breed a vast amount, but only a few fry survive each cycle. The rest serve as food for the compressiceps from his successful missions. Enough to grow the colony, enough to feed the system. Predation keeps balance. Structure creates opportunity, and time does the rest. This tank isn't peaceful, it isn't manicured, but it's honest. And in nature, that's exactly how it works. नेचर में एक्चुअली ऐसा ही होता है बहुत सारे बच्चे होते हैं जिसमें से कुछ बचते हैं काफी शिकार हो जाते हैं एक दो फिर ब्रीड करते हैं फिर बढ़ते हैं हाँ लाइफ लेसन सीखने को मिला नेचर इज क्रूअल नेचर इज रियली क्रूअल किसी के साथ ही नहीं है वो कोई नहीं होपफुली वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी आई थिंक आपको थोड़ा सा कुछ अलग डायनामिक्स मिला होगा एक्वेरियम हॉबी का शाउट आउट टू बायोटावल्स अगर आपको ओरिजिनल वीडियो देखनी है जाकर देख लेना आई विल लिंक दैट वीडियो इन द कमेंट सेक्शन नहीं डिस्क्रिप्शन में ठीक है अगर आपको देखनी होगी डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लेना ओरिजिनल वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी वहीं पे और होपफुली ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी मिलते हैं हम नेक्स्ट वाले में कुछ और नया सीखने के लिए कुछ और नया देखने के लिए मेरे साथ तब तक के लिए सी यू बाय बाय